Hello students, welcome to M Square Maths Mantra, and from today I'm going to start a free course of number theory in which I will provide you proper notes and proper question practice so that कि आप IIT एग्जाम CSIR नेट गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नंबर थ्योरी से आने वाले क्वेश्चंस को easily कर सकें. And if I talk about myself, then my name is Ayush Gupta and I have been awarded gold medal in MSc Mathematics from NIT Jaipur, and I will teach you free course of number theory, group theory, field theory and ring theory. बच्चों की इन टॉपिक्स में काफ़ी दिक्कत होती है, so we will cover all these topics. And in our first lecture, we will see the topics perfect numbers, fundamental sets, and the classification of fundamental sets. So write down the first heading, which is perfect numbers. Perfect numbers. Okay, let's write down the definition. A positive integer is called perfect number if it can be written as the sum of its proper divisors. Its proper divisors. For example, let us suppose मैंने एक नंबर लिया 6. 6 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो इस 6 के प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होंगे? तो आप कहेंगे सर द प्रॉपर डिवाइजर्स शुड बी 1, 2, 3. बट हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि 6 भी होगा इसका प्रॉपर डिवाइजर. बट नो, 6 इज नॉट अ प्रॉपर डिवाइजर्स, क्योंकि प्रॉपर डिवाइजर्स में हम उन्हीं नंबर्स को लेते हैं जो कि हमारे 6 से छोटे हों, विच मीन्स 1, 2 and 3 are proper divisors. So 1 plus 2 plus 3 is equals to 6, which implies that 6 is a perfect number. For example, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 3. 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो इनके प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होंगे? द प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 3, it will be 1, and we will not consider 3 because 3 तो मेरा number itself है. So clearly we can say that 1 is not equals to 3, which implies that 3 is not a perfect number. Okay, so with the help of proper divisors, we can easily see that which numbers are my proper divisors and which are not proper divisors. Okay, so right on the next heading, the fundamental sets. Fundamental sets. So basically, in full course of number theory, group theory, we will going to use these sets. For example, capital N. Basically, it is called the set of natural numbers. And in this set, we will see the numbers 1, 2, 3, 4, and so on. Basically, these are also called as the counting numbers also. And capital Z, it is called the set of integers. And in this, we will see 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, and so on. Then we will see the set of rational numbers. Set of rational numbers. फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कैसे नंबर्स आएंगे? तो इनमें वो सभी पी अपॉन क्यू फॉर्म्स के नंबर्स आएंगे सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p comma q both are integers. Then अगर मैं बात करता हूँ c complement, so it is called as the set of irrational numbers.
फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर्स हमारे कैसे होते हैं. अगर मैं बात करता हूँ पाई, so pi is a irrational number. It is not terminating, not repeating number. Then it is root 2, root 3, which means square root of non-perfect square numbers. All these are called as the irrational numbers. Then write down capital R. Basically, it is the set of real numbers. And the set of real numbers, basically, it is nothing but the union of set of complex numbers and set of irrational numbers. Then write down capital C. Basically, it is called as set of complex numbers, in which definitely complex numbers can be denoted as Z, and we can write as x plus iota y, where x comma y are real numbers. So basically these are the fundamental sets. We're going to use these sets in full course of our group theory, number theory, and field theory, ring theory. Okay, so write down the next heading, the classification of fundamental sets. Classification of fundamental sets. For example, लेट सपोज कि अगर मैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करता हूँ, सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे नंबर्स आएंगे, इन विच एक्स प्लस आयोटा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. सो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जिनमें हमें इमेजनरी नंबर्स मिलते हैं एंड रियल नंबर्स मिलते हैं, एंड इन्हें हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. नाउ जो रियल नंबर्स हैं उनको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जिनमें हम irrational numbers and rational numbers पाते हैं. और रेशनल नंबर्स को बेसिकली हम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द फ्रैक्शन एंड अदर इज द इंटीजर्स. एंड वी नो दैट इंटीजर्स के अंदर तीन तरह के नंबर्स हमारे पास हमें मिलते हैं. वन इज द नेगेटिव इंटीजर्स and the singleton 0 and positive integers. So अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर्स के साथ ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया, देन दिस सेट इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉन पॉजिटिव नंबर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स. और अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया, देन दिस कलेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव नंबर्स or non-negative integers. So from above classification, we can write down a note such that set of natural numbers contained in set of integers and set of integers contained in rational numbers and set of rational numbers contained in set of real numbers and set of real numbers contained in capital C, which is set of complex numbers. Oh, thank you.